हेलो। 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 हाँ सर, हाँ सर, बोलिए सर। सर क्या है, मीटिंग है क्या? हेलो। हाँ सर, ऐड हुआ हूँ मैं अभी ग्रुप में। आज है मीटिंग क्या? हेलो। हाँ सर, अभी ऐप पे आया था मीटिंग का। कितने बजे से है? 7 o'clock से है, 7 o'clock से 8 o'clock तक। सुबह 7 तक है। ओके सर। हेलो। हेलो। हाँ सर। यस सर। हेलो। यस सर। हाँ सर, बोलो ना। हेलो। सर बोलिए ना। सर स्टार्ट कीजिए ना। Hello, I'm audible. यस सर। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। हेलो सर।
सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है सर। हेलो। वॉइस नहीं आ रही है सर आपकी। सर आपका वॉइस नहीं आ रहा है। Is I'm audible now? Yes, sir. Yeah. So I'm repeating once again. You just have to listen it. Don't ask any question as of now. At the end of the lecture, you will get 10 minutes to ask your queries. Let me clarify. There is no official WhatsApp group for you all. You just have Telegram group through which you will get all the official information related to your syllabus, related to your lectures and your exams and study material. Mr. Om Batavle, you don't have to use screen. Okay, if anybody is in the lecture with a fake name or not a real name, I am not going to reply for those queries. So you can just have your own real name if you are joining the lecture. Okay, so I think I'm audible now. So again, I'm repeating, if my voice is not clear, if I'm not audible, you can just wait for the lecture to get over. Once the lecture gets over, you will get the recorded video in your official Telegram group. Okay, sir. Yes, sir. Okay, so I guess screen is visible to everyone. On the screen, we have our syllabus. Your every subject is of 50 marks. Out of 50 marks, there will be internal exam and external exam. Internal of how many marks and internal of how many marks will be informed to you soon. It is a 70-30. 70% of marks will be in external exam and 30% will be conducted through internal exam. So we have two modules. First module is Introduction to Management and various managerial thoughts related to Indian management and international management. Next, we have functions of management. So this is the syllabus for the module number 1 and module number 2. Module number 1 and 2, some of the topics you have already studied in your class 12. If any, most of you are from the commerce background. So in class 12, you had subject called OCM. In the OCM subject, you have studied what is management, what are the management principles and functions of management, levels of management and all. So there is some overlapping topic and similar topics. So you will get a brief idea about the management and the thoughts of management and Indian management related thoughts. Hello. So we have two modules. Module number 1 is the basic module about the introduction of management and managerial thoughts. In this module, we will discuss the basic concepts of management and features of management. Along with that, we are going to I'm not going to answer the questions in between. I have already informed you all that at the end of the lecture, last 10-15 minutes, I'll keep for the queries related to your subject for this particular subject. Meanwhile, you can just
You just have to listen to the lecture. You are not here to decide when the exams will be there and बहुत सारे queries है सबको. So I will answer the queries at the end of the lecture. But अभी सबको सुनना है what is your subject. Nobody is asking question about the subject name or the syllabus or the portion or the topics we are going to cover. बिना पढ़े एग्जाम दे दोगे क्या? So if you have taken the admission to the distance mode, then please follow the rules of the distance mode. So I will try to answer all of your queries. Let me summarize quickly. We have two modules. Module number 1 is the basic introduction about the management and the managerial thoughts, and module number 2 is about the functions of management like planning, decision making, and organizing. These three functions we will discuss in brief. There are more management functions which we'll discuss in the second semester. Till now, anybody has any queries? Like we have two modules. Module number 1 is about the basics of management, the Indian thoughts of management. We will briefly discuss Chanakya's thought about management and the Gandhiji's principle related to the management. And I'm going to start with the basics of management. So let me start. Anybody is aware what is management? Functions. Yeah, Nure. Anybody is aware of what is management? Sir, type of functioning. Type of Functioning. okay, type of functioning. Anybody Managing else? day-to-day activities of a business. Right, correct. So management is something like which we use in daily life. Management is not like commerce specific domain or it is related to the management students only. Am I audible to everybody? Yes. Yeah. So management is a universal Yes. subject. Universal means which is applicable to everybody's life. Let me give you a simple example. In our day-to-day life, we use management on a daily basis. Life का कोई भी ऐसा एक दिन नहीं जाता जिस दिन हम लोग management use नहीं करते हैं. Since we wake up in the early morning until we go to the bed at the night, meanwhile in the entire day's time we use the management thing. सुबह सुबह उठ के आप सब लोग अपने जो भी ऑफिस वगैरह का या जो भी बिजनेस वगैरह है उस पर जाने के लिए टाइम डिसाइड करते हो, घर के सारे काम करके राइट अपने ऑफिस के लिए निकलते हो, आप पूरा का पूरा टाइम मैनेजमेंट करते हो. ऑफिस से निकलने के बाद इफ यू हैव सम वर्क टू लाइक दोस्तों से मिलना है या फिर घर के कुछ काम है, देन यू कंप्लीट ऑल इन द डेज टाइम ओनली, राइट. तो ऐसा नहीं होता है कि कभी एनीबडी इज फीलिंग लाइक कि टाइम कम पड़ रहा है, राइट. दिन में जो जो टास्क डिसाइड किया था वो नहीं हो रहा है. वी गिव प्रायोरिटीज. We do the task which is most urgent and like important. I will give you one example. In everybody's home there is a super manager. Everybody is mom. सबकी मम्मियां जो होती है ना, they are best managers. They manage everything so efficiently, right. सही टाइम सही काम पे हो जाता है. So they use the resources effectively. So management is something which we use in our day-to-day life to manage our tasks effectively with the available resources. So we are commerce student and हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि कभी भी resources are limited. So we have to complete all our requirement with the available resources. So management is nothing but management is the activity or a tool which helps us to use our resources effectively. If we go through by word, so management is an ancient activity from evolution of mankind. जब से humans है तब से management हो रहा है. We are managing our time, our tasks, everything, right. We are living at a specific place in a specific group to conduct activities like cultivation, fishing, hunting. हम daily life में जो भी काम करते हैं ना सब management के हिसाब से हो रहा है. We are doing everything. आई रिक्वेस्ट कि स्क्रीन पे प्लीज कोई कुछ एक्टिविटी ना करे. So you have your chat box and your mic. If you really want to ask any question, you can use the chat box. Meanwhile, I'll go through the chat box. If anybody is asking any question, I have already told you that last ka 10-15 minutes I will keep for the question answer session. So that time you can ask your queries.
Okay, so management is a universal phenomena. It is not like कि, we are as a student or we are as a commerce background people only use management. Management is used by everywhere. Let it be school, college, hospital, hotel, let it be bank, let it be government organization, any kind of organization is there, they are using मैनेजमेंट प्रिंसिपल. अच्छा मुझे ये बताओ, आप लोगों में से कभी कोई बैंक में गया है? एनीबॉडी जी. हैज विजिटेड द बैंक? सर मैं Yes. बैंक में काम करता हूँ. Yes, sir. बैंक में काम भी करते हो, वेरी गुड. सो इफ यू हैव ऑब्जर्व्ड वन थिंग, देयर इज अ थिंग बैंक में, इफ यू हैव ऑब्जर्व्ड वन थिंग दैट एवरी staff is working under specific department. They have been divided their work. They have got the specific task to do. Now this is also a part of management. They know what they have to do. अगर उनको पता ही नहीं होगा कि करना क्या है, लाइक संडे के दिन या जब भी छुट्टी वाला दिन होता है, तब आपने देखा रहेगा कि हम लोग आराम से उठते हैं. बिकॉज वाई? बिकॉज वी आर मेंटली प्रिपेयर्ड कि कुछ करना नहीं है. बट इन आर वीकली रूटीन, मंडे टू लेके सैटरडे, या किसी का ऑफिस अगर मंडे टू फ्राइडे है, तो हम लोग बहुत ज्यादा टाइम टेबल को फॉलो करते हैं. मुंबई में ना एक चीज ऑब्जर्व करना, अगर आपने किसी बिजी स्टेशन को ऑब्जर्व किया हो. अच्छा, देयर इज अ सजेशन फॉर ऑल ऑफ यू दैट वी आर अ कॉमर्स स्टूडेंट, सो वी शुड हैव वन स्किल इन आवर लाइफ, दैट इज ऑब्जर्वेशन स्किल. वी शुड ऑब्जर्व एवरीथिंग, राइट? ऑब्जर्वेशन से क्या होगा ना, यू विल बी एबल टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम योर सराउंडिंग्स, एंड इट इज अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट. अब ऐसा नहीं है कि आप रास्ते में किसी को घूरते हुए चलो या फिर आप किसी को स्टेयर करो, ऐसा नहीं करना है. You just have to observe your surrounding. I'm taking few stations name like Virar, Borivali, Andheri, Bandra, Dadar, Kurla. These stations are station where the fast train stops. अगर आप इन स्टेशंस को ऑब्जर्व करोगे ना, अर्ली मॉर्निंग के टाइम पे, स्पेशली बिटवीन 9 to 11, 9 to 10:30, बहुत सारे लोग ना आपको ना ट्रेन से उतरते ही ना ब्रिजेस क्रॉस करने के लिए भागते हुए नजर आते हैं. बिकॉज ट्रेन से छूटने के बाद ही ना उनकी इमीडिएट कोई बस होती है या शेयरिंग ऑटो की लाइन होती है, बिकॉज उनको इमीडिएटली एक पर्टिकुलर टाइम में ना ऑफिस पहुंचना होता है. सेम चीज शाम के टाइम पे होती है. अगर किसी ने विरार की ट्रेन या फिर कल्याण बदलापुर अंबरनाथ की ट्रेन को ऑब्जर्व किया रहेगा, तो देखा रहेगा कि उसमें चढ़ने के लोग कभी कभी एक दूसरे से लड़ भी पड़ते हैं. व्हाई दे आर डूइंग दिस? बिकॉज दे आर कॉन्स्टेंट ऑफ टाइम. बिकॉज दे यस नो सर. कि अगर एक ट्रेन छूट जाती है, राइट, मुंबई में वी हैव अ वेरी बेस्ट, वेरी गुड नेटवर्क ऑफ ट्रेन कनेक्टिविटी. मुंबई का लोकल ट्रेन इज द बेस्ट ट्रेन सिस्टम इन इंडिया. बट देन ऑल्सो पीपल फाइट विद इच अदर, और लोग भागते हैं कि एक भी ट्रेन मिस नहीं होनी चाहिए. बिकॉज इफ दे मिस वन ट्रेन ना, they get late for 15 to 20 minutes or sometime half an hour. So they know the value of time. They manages everything so well, so effectively कि वो exact time पे अपने ऑफिस या घर पहुंच जाते हैं. So this is the basic example of management in our day to day life. So management universal phenomena है. समझा क्या होता है? Management is applicable everywhere, right? Management is applicable to everywhere. In our day to day life also, हम लोग क्या करते हैं? मैनेजमेंट का यूज करते हैं. तो मैनेजमेंट इज समथिंग विच वी यूज इन आवर डे टू डे लाइफ. सो ये सब्जेक्ट पढ़ने के बाद यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज मैनेजमेंट, व्हाट इज द यूज ऑफ मैनेजमेंट, एंड व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट. सो वी विल डू फ्यू बेसिक डेफिनेशंस ऑफ मैनेजमेंट. इसमें से एक डेफिनेशन आपने पहले भी किया होगा. The second definition is of Mary Parker Follett, in which the author says that management is an art of getting things done through the people. Management is an art of getting things done through the people, which means we have to get the work done with the help of people. Is it visible to everyone? The screen is visible. Yes, sir. यस सर. यस सर. Yes, sir. So let me just Yes, sir. explain this definition. See, we have to perform certain function in a group. कुछ लोगों का ऐसा होता है कि नहीं नहीं, मैं किसी को बोलूंगा ना तो लेट होगा, पता नहीं उसको समझेगा कि नहीं समझेगा, इससे बेटर मैं खुद ही कर लेता हूँ. बट वी कैन नॉट परफॉर्म ऑल द फंक्शंस अलोन. क्या हम लोग सारे काम खुद कर सकते हैं क्या? No, sir. नहीं No. सर. No, नहीं. sir. No, sir. Sorry. So we have to
allot the task to someone, हम लोग को किसी ना किसी से काम करवाना है. So this definition says that management is the art of getting things done through the people. We have to get our work done with the help of others. अब दूसरों से काम करवाने के ना दो ही तरीके हैं, या तो आप प्यार से काम करवा सकते हो या किसी को डरा धमका के मार से काम करवा सकते हो. एंड टेल मी विच वन इज द बेस्ट मेथड टू गेट द वर्क डन विद द लाइक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर, और डर के माहौल में काम हो सकता है, बोलो. वेरी गुड. सो देखो, डरा के क्या होता है ना, इमीडिएट काम हो तो जाएगा, बट दिस इज नॉट अ लॉन्ग लास्टिंग टास्क. इफ यू वांट अ लॉन्ग टर्म रिलेशन ना, देन यू हैव टू बी विद द पीपल. वी हैव टू बी अ लीडर, नॉट द मैनेजर. वी आर स्टडिंग मैनेजमेंट, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड, we should or we have to develop the leadership ability. Management helps you to understand how you can get the work done with the help of others, right? सो हम लोग को टीम में काम करना है. अगर आप लोगों ने ना वर्ल्ड वाइड एक चीज ऑब्जर्व किया है, सो इफ यू हैव ऑब्जर्व वर्ल्ड वाइड, पिक एनी कंपनी, मोस्ट ऑफ द कंपनी, मैं एनी कंपनी नहीं बोलूंगा, इट मे साउंड रॉन्ग, वर्ल्ड की ना टॉप कंपनीज लो आप, उसमें ना एक चीज चेक करना, द टॉप मोस्ट मैनेजरियल पोजीशन पीपल आर इंडियंस. इंडियंस आर वेरी गुड एट डूइंग द मैनेजरियल जॉब. दे आर गुड एट मैनेजिंग द टास्क. देखो ना, हम लोग को बचपन से सिखाते हैं, लाइक इफ आपके घर में आप लोग सिबलिंग्स हो, बड़े भाई बहन है, तो देखो बड़े भाई बहन के कपड़े छोटों को मिल जाते हैं, ये बोल के कि नए की क्या जरूरत है, ये तो तेरे को आ जाएंगे, राइट? So this is the best example of optimum utilization of resources. Why to waste the resources? अगर कोई छोटा भाई बहन नहीं है तो पोछा बनने के काम में भी आ जाता है, right? We are very good at efficiently utilization of resources. This is the simple example of management. So these are basic examples which shows that how management is important in our day-to-day life. Let's suppose ना कि आपके बिजनेस में, आपके ऑफिस में कोई एक ऐसा स्टाफ आ जाए जो ये सोच के काम करे कि चलो बॉस के तो बहुत पैसा है, मस्त उड़ाते हैं. सोचो क्या होगा, कितने दिन चलेगी ऑफिस. देयर आर एग्जांपल जिसमें बड़ी बड़ी कंपनीज बंद हो गई हैं, राइट? वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ कंपनी कॉल्ड कोडैक. बचपन में अगर किसी ने फोटो स्टूडियो में फोटो खिंचवाया रहेगा तो यू मस्ट हैव रिमेंबर कि ऑल ओवर इंडिया ना, जहां कहीं भी फोटो स्टूडियोज होते थे ना, वहां पे कोडैक ही होता था. बट नाउ डेज अब तो फोटो स्टूडियोज ही कम हो रहा है, बट कोडैक के कैमराज ही नहीं है, राइट? सोचो एक टाइम जो कंपनी इतनी बड़ी कंपनी थी, नाउ दैट कंपनी इज नोवेयर. हाउ मेनी ऑफ यू हैव known or are aware of a brand called BlackBerry? कोई जानता है ब्लैकबेरी को? देयर वाज Yes, sir. हाँ देयर सर. वाज अ फेमस ब्रांड ब्लैकबेरी, आईफोन के आने Yes, के sir. पहले. दैट वाज हाँ. अ आईफोन ऑफ दैट Yes, sir. टाइम. तो यस. तो आई हमारे रिक्वेस्ट पेरेंट्स यूज करते थे सर. आई रिक्वेस्ट प्लीज बी ऑन म्यूट. आंसर दे दिया तो प्लीज म्यूट पे हो जाओ. BlackBerry used to be a very hyped and very like costly mobile phone. 15-20 years back वो लोगों के फोन आते थे 40,000, 60,000, 80,000 around के. Nowadays we get a good quality mobile phone, right? And that time they were not into a touch screen type of thing. But उस टाइम उनका मैनेजमेंट ठीक था, बट टाइम के हिसाब से they could not cope up. So management में we understand one more thing, that we have to be dynamic. Now what is dynamic? We have to change or adjust ourselves as per the changing time and technology and situation. I will give you one basic example. सबने पहले भी सुना रहेगा, या nowadays we are a internet generation era people, so we have known the Nokia brand. There was an interview of Nokia CEO when Nokia failed. Then CEO broke down. उन्होंने like बहुत ही ज्यादा चालू ही है nervous ना. tone में ये बोला था कि we didn't commit any wrong, but don't know why जान we दे, failed. जान दे. Mr. Umesh, कॉलर की बढ़ गई है ना. mute पे हो जाओ. बढ़ गई होगी ना. See, if you don't want to speak, don't unmute yourself. Huh? If you really want to ask question, then only you unmute and ask the question. I know a lot of students are working people. They are traveling and they are joining the lecture, so it is not a problem. But please don't create a problem for others. Second definition is given by the famous management author Henry Fayol. We will study about Henry Fayol in coming lectures. According to Henry Fayol, management is to manage, is to forecast and to plan, to organize, to command,
to coordinate and control. So management is a set of multiple functions which helps us to forecast and plan to see the future. If I ask you one question, is anybody is here they can see the future? कोई है ऐसा जो future देख सकता है? कोई नहीं. Nobody is there in Oh, the sorry. world जो future देख सकता है. But what if I can tell you that everyone can see the future? मानोगे Sir, सब can लोग? you explain me again, sir? Which topic? See, my question This was, one, this one I can't understand. Please, sir. okay, so देखो, I have just explained the definition of management. Definition of management says that we have to get the work done with the help of others. We cannot do everything alone. So we have to get support from the people, and to get the work done from the people, we have to be very polite. We have to use the management effectively. Then only we will be able to get the work done. Okay, sir. मेरा क्वेश्चन ये था कि we cannot see the future, but we can predict the future if management is there. अब जैसे एक एग्जांपल देता हूं मैं, आप लोग खाली सुनना और रिप्लाई करना चैट बॉक्स में, कोई भी अनम्यूट नहीं होगा. जस्ट अज्यूम टाटा, इंडिया की एक कंपनी है टाटा, उन्होंने ना कोई एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है. क्या वो प्रोडक्ट अच्छा होगा क्या? So most of the people are going to say yes. Why? Because Tata has so much positive brand image. Tata has a so much goodwill in the Indian market. And till time उनके जितने भी products हुए हैं, right? वो अच्छे हुए हैं. तो people assume. तो अभी बोलो सबने future देखा कि नहीं, right? Let's suppose if I give you few examples, अगर मैंने किसी को पैसे दिए and I ask that people कि जाओ शॉप से 1 किलो नमक का पैकेट लेके जाओ, तो majority of time that person will bring Tata salt, Tata namak, right? Why? There are other companies also who are selling the salt, but they have trust on salt. Shop सर आवाज नहीं आ रही. हेलो. Yeah, am I हेलो. हेलो, सर आवाज नहीं आ रही आपको. हेलो. आ रही सर आवाज? आपकी आवाज ब्रेक हो रही है सर. now I'm audible? यस Yes. सर. Are audible Okay, right now. great. No, sir. Still I'm not audible. See, No, मैं sir. यस सर. starting में बोला I था am कि also not audible, sir. any issue is No, there? sir. सर आवाज नहीं आ. If voice related any issue is there, you can just wait for the lecture to get over. Lecture gets Okay. Steady. Steady.
Hello. Hello, sir. Are you there? Hello, hello. Excuse me, Hello. audible. सर तो पढ़ा रहे हैं बट उनका आवाज ही नहीं आ रहा है. If as I am audible now, Yes, sir. Please Yes, continue. sir. Yes, sir. Yes. see, just Yes, sir. follow two things. If you have any queries, use the chat box. If still my voice is not audible now, you can just wait for the lecture to get over and the recorded video will be uploaded in a Telegram group. And I'm repeating once again, there is no official WhatsApp group for you all. Okay, there is only one Telegram group which is created by the university and you have to be part of that group only. If anybody is committing that join this WhatsApp group, that WhatsApp group, you are responsible if anything happens. Okay, I will share the PPT and the video recording of this lecture in your official Telegram group. Is it clear, everyone, now, I guess? So I'm continuing in the lecture. The topic is nature and characteristics of management. So management के characteristics में first feature, characteristics is feature only. So management is a goal-oriented activity. We take the management activity to accomplish any goal or target. To achieve the target, हम लोग क्या करते हैं? Management को follow करते हैं. Management is a continuous process. What is management? It is a continuous process. That means Setting clear goals and targets. मैनेजमेंट इज नॉट अ वन टाइम प्रोसेस जो एक बार ही कर लिया तो खत्म हो गया. डे टू डे लाइफ में डेली आप लोग करते हो, डेली का रूटीन फॉलो करते हो. सेम वे मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस व्हिच गोज अलोंग टिल द वर्क गेट्स कंप्लीटेड. और एक काम हो गया तो दूसरा आएगा तो उसमें भी मैनेजमेंट करना ही पड़ता है. इट इज यूनिवर्सल एप्लीकेबल. इट इज नॉट लाइक कि इंडिया में कर लिया है बाहर नहीं चलेगा. इट इज लाइक अ principle of science which is applicable everywhere. If you are good at management in India, then you can surely get success in overseas as well. In management is a universal phenomena. It is applicable equally all around the world. It is not like कि इंडिया में आप मैनेजमेंट में अच्छे हो तो फॉरेन कंट्रीज में नहीं होगे, या फिर एक इंडस्ट्री में आपने मैनेजमेंट में अच्छे से काम किया है. आई विल गिव यू जस्ट वन एग्जांपल. There is a new metro line which is opened recently in Mumbai called Aqua Line or Mumbai Metro 3, which is an underground metro line in Mumbai which connects the Mumbai to the Mumbai city. That is a town side area, and that is entire mostly the part of that metro is underground, and the work which is managed by the committee is MMRDA, and the main task of managing all of these things were given to one IAS officer, Madam Ashwini Bhide ma'am, and she managed everything so efficiently. Being from non-technical, non-science background, only she was good at managing the thing, get the thing done at the earliest and in the best possible manner. She used to get involved in everything. She used to get understand what the task is there, and now she is termed as the Metro Women of Mumbai because she used the management principle so effectively. She was not a construction expert, but she got the team, she hired the team, or she contacted everybody all around the world, which was best for constructing that type of infrastructure for Mumbai. Right? सबको समझा what is universal applicability? Management is applicable to every type of company. Let it be manufacturing concern, let it be construction company, let it be service based industry, let it be urban, rural, or any type of company. Right? Yeah, correct, Tejas. Applying core principles consistently across different sectors. So this is what the management is. Management is universal phenomena. It is intangible in nature. We cannot see the management, but we can feel the management. Like अभी just थोड़ी देर पहले मैंने example दिया था टाटा का. So everyone was, majority of you were assured that टाटा के product अच्छे ही होंगे because the टाटा का management is good.
right? As of now, Tata is in a good picture. So whatever they do, people are ready to pay certain extra as well. Tata के product affordable नहीं होता है, बहुत ज्यादा सस्ते नहीं होते हैं. They keep the prices at par with their international or national competitor, but again, customers are have too much positive about Tata. So this is what the management. Management is intangible in nature. Next, management is a group activity. We cannot do the management alone. We have to take the help of team members. So management is a group activity. Just याद करो थोड़ी देर पहले जो definition किया हमने, management is an art of getting things done with the help of others. We cannot do the management thing alone. घर में ही सोच लो, अभी आप लोग जितने सारे लोग हो, आप में से कुछ लोग जॉब पे से घर पे जा रहे हो. जब आप घर पे जाओगे तो आपको, अगर आप फैमिली के साथ हो, मम्मी है, पापा है, या फिर सिबलिंग्स है, या फिर इफ यू आर मैरिड, यू हैव अ वाइफ और हस्बैंड, तो आपको घर पे घर का जो काम है वो मिलेगा. या फिर बोथ आर वर्किंग, देन दे विल सपोर्ट ईच अदर, राइट? दिस इज अ ग्रुप एक्टिविटी. सो वी कैन नॉट थिंक ऑफ कंप्लीटिंग आवर टास्क अलोन. सो मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी. मैनेजमेंट इज एन आर्ट. व्हाई आर्ट? बिकॉज इट टेक्स द हेल्प ऑफ पीपल. लोगों से काम करवाना, तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, right? Because we are people are emotional animals. We think a lot, we get attached, we get attracted, we get afraid, right? Afraid of anything. अगर आपको लोगों के साथ काम करना है, तो we have to be very careful. That's why management is an art. Management is also in science because we follow certain fixed principles, right? ऑफिस में देखोगे डिसिप्लिन एंड रूल फॉलो करना पड़ता है. दैट इज अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट. माइक ऑफ कर लीजिए प्लीज, आवाज आ रही है. Between. Sir, there are multiple interruptions happening. Please ask them to mute themselves. I will give you chance to speak at the end of the lecture. So it's my humble request to not to speak in between. Next, management is a profession. We can select management as a profession. If you are good at managing the things, you can work as a manager in multiple type of organization. अभी देखो एग्जांपल में थोड़ी देर पहले मैंने बोला था, the leading company of the world have Indian managers. जितने भी CEOs हैं, let it be Google, Amazon, Meta, जितने भी लीडिंग कंपनीज है, उनके सीईओस की पोजीशन पे जो टॉप मैनेजरियल एम्प्लॉइज हैं, दे आर इंडियन. बिकॉज समवेयर वी आर गुड एट मैनेजिंग द टास्क, बिकॉज बचपन से हम लोगों को बहुत सारी चीजें सिखाई जाती है, जैसे मल्टीपल थिंग्स को कैसे एक साथ परफॉर्म करना है, या फिर लिमिटेड रिसोर्सेज में कैसे टास्क को कंप्लीट करना है, राइट? स्कूल में, कॉलेज में आप लोगों ने बहुत सारी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किया रहेगा, जहां पे आप लोगों को ना प्राइज या बजट का एक लिमिट दे दिया जाता था कि इतने में ही करना है. या फिर बचपन में भी घर पे से आप लोगों को पॉकेट मनी या तो मिलती थी, या तो कुछ एक लिमिटेड फिक्स अमाउंट मिलता था, और ये बोल दिया जाता था कि इतने में ही करना है. तो आप ना बचपन से ट्रेंड होते हो कि चीजों को कम रिसोर्स में बेस्ट पॉसिबल जो उसका यूज है वो कैसे करना है. दिस इज व्हाट मैनेजमेंट इज. नाउ आई विल टेल यू वन थिंग. वी आर ट्रेन्ड फॉर मैनेजमेंट सिंस चाइल्डहुड. वी आर नॉट अवेयर ऑफ, बट वी आर वेरी गुड एट मैनेजमेंट, बिकॉज हम लोगों को बचपन से बहुत सारी चीजें ऐसी बताई जाती है. अच्छा, एक चीज सब लोग रिलेट कर पाओगे. बचपन में ना एक चीज ना सबकी मम्मी ने बोला रहेगा, जो चीज जहां से उठाई है वहीं पे रखना है. यस और नो? चाहे वो टीवी का रिमोट हो, चाहे वो घर की कोई भी छोटी मोटी चीज हो, आपको हमेशा ये सिखाया जाता था कि जो चीज Yes, जहां से sir. उठाई है. दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, कॉल्ड मैनेजमेंट प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर. प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर विच मीन्स वी शुड कीप द प्रोडक्ट फ्रॉम वेयर वी हैव टेकन, सो दैट कि जो नेक्स्ट पर्सन आएगा उसको ना वो ढूंढने में टाइम वेस्ट ना करना पड़े. सो जस्ट अज्यूम करो, this is management is so basic. It is in our day to day life. This is nothing like rocket science. This is the basic thing which we use in our day to day life. Management is dynamic in nature. Management keeps changing as per the time and situation. Let's suppose now कोई एक छोटा बच्चा है, उसने ना एक बेकार सी ड्राइंग बनाई है, राइट? और उसने आपको पूछा कि दीदी बताओ, भैया बताओ कैसी ड्राइंग है. क्या आप उसको बोलोगे कि नेक्स्ट टाइम से पेन पेपर मत उठाना, इतना गंदा ड्राइंग किया है तूने? नहीं. वी विल टेल हिम वाओ कितना अच्छा ड्राइंग है, राइट? ताकि वो बच्चे को अच्छा लगे. बिकॉज एट दैट एज अगर हमने उसको स्कोल्ड किया, डांटा, तो मे भी हो सकता है कि उसका जो माइंड है वो अफेक्ट हो. वो सोचेगा कि नहीं गलती है ये, तो ड्राइंग करना ही नहीं चाहिए. बट जब वो थोड़ा बड़ा होगा तो हम उसको समझा सकते हैं कि आप कुछ और करो, किसी और करियर में जाओ. एक चीज याद करना, जब आप छोटे होते हो, देखो छोटे बच्चों को ना वो सिटी वाले
शूज या चप्पल पहनाते हैं, जब वो बजते हैं, चलते हैं तो बजते हैं, या उसमें लाइट्स आती है? बच्चों के लिए वो Yes, sir. अच्छा है। बट मान लो कि आप लोग अभी ये एज में वैसे शूज पहन के घूमो जो चलने पे बजे और लाइट्स आए, तो देख के लोग हंसेंगे तो, बट वो फनी वे में होगा, वो आपके लिए सही नहीं होगा। समझ रहा है ये? तो कभी जो चीज सही थी अभी वो चीज सही नहीं है। तो मैनेजमेंट में भी थोड़ी सी चीजें ऐसी होती है कि टाइम और सिचुएशन के हिसाब से, मान लो कि आपके ऑफिस में कोई एक वर्कर है, उसने आपको आके रिक्वेस्ट किया कि सर मेरी ना तबीयत खराब है, क्या मैं जल्दी जा सकता हूँ? तो क्या आप बोलोगे उसको कि तुम लोग का ही तबीयत खराब होता है, तुम लोग के साथ में ऐसा होता है? कोई स्टाफ लेट आया, उसने बोला कि सर मेरी बस छूट गई थी, क्या आप उसको स्कोल्ड करोगे? यू हैव टू अंडरस्टैंड। समझ रहा है ये? दिस इज व्हाट मैनेजमेंट इज डायनामिक इन नेचर, वी हैव टू गेट एडजस्टेड विद द टाइम एंड सिचुएशन। नेक्स्ट, मैनेजमेंट कैन नॉट बी रिप्लेस्ड बाय कंप्यूटर्स। जितने भी एआई वाले टूल्स है या जितने भी ऑनलाइन डिजिटल टूल्स है, दैट कैन नॉट रिप्लेस द मैनेजमेंट, बिकॉज मैनेजमेंट नीड्स ह्यूमन इंटरवेंशन। मशीन को क्या समझ में आएगा कि इमोशन क्या है, फीलिंग्स क्या है? इन फ्यूचर इट मे हैपन कि एआई इतने एडवांस हो जाए, बट एज ऑफ नाउ टाइम बीइंग, रियल डेटा सॉल्व करने के लिए या एम्प्लॉयज को हैंडल करने के लिए वी नीड ह्यूमन इंटरवेंशन एंड वी नीड managerial abilities. Is it clear, everyone? Yes, sir. बताओगे एक बार? Okay, so just a minute. Now there is a small topic, वो करके then I'll give you chance to ask your queries. There are 6 M's of management. So in management we use these 6 M. First M is manpower. Here it is written man, but manpower means staff. So staff में any gender can be there. So management में we need manpower, talented or deserving, or the right employees are needed to perform the right task. You all have studied the function of management in your class 12. In that it was one management function was there called staffing. What is staffing? It means placing the right employee at the right job at the right time. So effective staff can help the company to boost their performance. Next is machine. We should have a related machineries to perform our day-to-day tasks, to perform our functions, which will help us to increase the efficiency and boost our performance. Next we have material. Material means whatever resources we require to perform our task, we should use the materials effectively. So management के 6M में first was manpower, that is your staff. Second was machine. Third is material. What is material? Material is one of the most important input in the production process. Material में आप हार्ड मटेरियल भी ले सकते हो, लाइक रॉ मटेरियल विच इज रिक्वायर्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग, बट इफ वी आर इन सर्विस सेक्टर तो अपने जो भी रिसोर्सेज है, टाइम एंड मनी, this is also a material, so we have to use it effectively and carefully. Next method, we have to find the best possible method to perform any task. अगर किसी काम को करने के more than one methods है, तो we should select the most appropriate and affordable method. यहाँ पे I am insisting on affordable because sometimes it is required to spend amount on something, but if it is feasible, अगर हो सकता है तो we should select the affordable option. Next is money. Money management is the best thing and the most important thing. We all should know how to manage the money. See, I will tell you one thing. Having the money is a good thing, but knowing how to manage money is the best thing. अगर आपके पास पैसे हैं तो अच्छी बात है, बट अगर आपको ये पता नहीं है कि पैसे को मैनेज कैसे करना है तो ये बहुत बेकार बात है. देयर इज अ कहावत इन हिंदी कि जब किसी बेवकूफ इंसान के पास पैसे होते हैं ना, तो दिमाग वाला इंसान भूखा नहीं मरता. वो क्या करता है, उस बेवकूफ इंसान को चढ़ाता रहता है कि भाई तू बहुत सही कर रहा है, सही कर रहा है, राइट, ऐसा ऐसा है, तेरे से अच्छा कोई है ही नहीं, अब एक काम करना, मेरे को थोड़े पैसे चाहिए, पैसे दे दे. अब वो इंसान तारीफ सुन के इतना खुश हो गया ना कि वो अपनी तारीफ में उस इंसान को पैसे भी दे देता है. समझ रहा है ये? अब यहाँ पे आई एम नॉट सेइंग कि मैनेजमेंट वाले बहुत ज्यादा चालू टाइप के होते हैं, नथिंग, बट मैनेजमेंट पीपल यूज देयर ब्रेन बिकॉज दे हैव टू गेट देयर वर्क डन फ्रॉम द अदर्स. लास्ट एम इज मार्केट. We have to know the market and accordingly we have to prepare the marketing strategies. Just assume करो you are going to enter into new market, आप पुराने वाले मार्केट की स्ट्रेटेजीज फॉलो कर सकते हो क्या? बोलो yes or no. No. Definitely not. We have to plan and organize the marketing strategy as per the different markets.
every market has different scenario, right? So according to the market scenario, we have to make the marketing strategies. So we have done three basic topics. We have covered the introduction of the subject, the syllabus, and in the first module, we have covered two topics, nature and characteristics of management and 6 M's of management. So now next 10 minutes, I'm here to attend your queries. If anybody is having any queries, you can ask your question related to topic only. सिलेबस कभी आएगा, स्टडी मटेरियल कभी आएगा, एग्जाम कभी होगा, ये सब नहीं, ये सब का एक शॉर्ट में आंसर है कि इसका जो भी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन होगा दैट विल बी शेयर्ड इन योर ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप. आई एम सेइंग अगेन दैट यू डोंट हैव एनी व्हाट्सएप ग्रुप. So now if anybody is having any question, you can unmute yourself and ask your queries. Sir, management is an art, a science. Last cannot be replaced by Just a minute, computers. your voice isn't audible. Let me plug in my earphones and then, yeah, now you can ask. Management is an art and science. हाँ. Last one cannot be replaced by computers. Right. Management is an art, science and profession. Management is an art because it involves human intervention and human activity. तो सपोज करो ना, हम लोग डेली अगर सेम काम करते हैं सेम तरीके से तो बोर हो जाते हैं. तो थोड़ा थोड़ा कभी फन एक्टिविटीज कर लिया, थोड़ा सा कभी किसी का बर्थडे सेलिब्रेशन हो गया, या थोड़ा सा ऐसे ही कैजुअल कुछ चीजें हो गई, तो ये क्या है, आर्ट है ना. काम तो हो ही रहा है बट थोड़े से फन वे में हो रहा है या थोड़े से इंटरेक्टिव वे में हो रहा है, बिकॉज ह्यूमंस आर इन्वॉल्व ना. मैनेजमेंट इज अ साइंस. व्हाई साइंस? बिकॉज वी आर फॉलोइंग सर्टेन प्रिंसिपल्स. जैसे टाइम है, डिसिप्लिन है. ऑफिस में सबको क्या करना होता है, फिक्स टाइम पे ही लंच करना होता है. ऐसा नहीं होता कि हम लोग कभी भी चाय पीने जा रहे हैं, राइट, कभी ब्रेक पे जा रहे हैं, घर पे नहीं बैठे हैं, राइट. ऑफिस में सर्टेन डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ता है. साइंस वर्ड आया, इसका मतलब सिस्टमेटिक चीजों की बातें हो रही है. प्रोफेशन मतलब इफ एनीबडी इज गुड एट मैनेजिंग थिंग, दे कैन परस्यू देयर करियर एज अ मैनेजर. दे कैन ज्वाइन एनी कंपनी. If they clear the interview, they can join any company and become manager and manage the things. Last में आपने बोला management is required. It cannot be replaced by machines or technology. As of now, it is correct because जिस हिसाब से AI वगैरह चीजें बढ़ रही है, in future के बारे में we cannot discuss too much thing about now. But as of now, management human intervention के साथ ही चलता है. Machines as of now cannot replace the managers. Now next, anybody have any queries? Total आपके 11 सब्जेक्ट्स हैं. टोटल 11 सब्जेक्ट है. 3 उसमें 11 सब्जेक्ट में से कितने कितने सब्जेक्ट्स के बुक मिलेंगे हम लोग को? मोस्टली आपको मेजर के मिल जाएंगे. आपको 5 सब्जेक्ट्स के अभी एज ऑफ नाउ तो मिल ही जाएंगे. आपको सब्जेक्ट तो सारे मिलेंगे. आपको स्टडी मटेरियल सबके लिए मिलेगा. स्टडी मटेरियल नहीं मिलेगा तो आप लोग अगर सिलेबस की कॉपी देखोगे ना, तो सिलेबस की कॉपी में ना रेफरेंस होता है. जस्ट एग्जांपल, लेट मी शेयर सिलेबस. इफ यू सी दिस सिलेबस ना, तो यहाँ पे देखोगे ना, लास्ट में ना रेफरेंस होता है. तो यू कैन गेट दिस रेफरेंस मटेरियल ऑनलाइन. तो ऐसा नहीं है कि आपको बुक मिलेगा तो ही पढ़ना है. आपको सिलेबस मिला हुआ है, आपके लेक्चर्स हो रहे हैं, तो आपको जस्ट ये बेसिस पे अपना जो प्रिपरेशन है वो करना है. एग्जाम्स आपके अभी डेट्स आई नहीं है. आई कैन नॉट कमिट एनी डेट्स. क्लियर है? तो आपको वेट करना होगा. जो भी एग्जाम से रिलेटेड जो भी ऑफिशियल कम्युनिकेशन है ना, वो आपके ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू ही होगा. Again, I am saying there is no WhatsApp group from the university's end. So you all have to follow and keep checking your Telegram group. Now, next question. सर जो असाइनमेंट होंगे उसका क्या होगा? असाइनमेंट होंगे तो आपको असाइनमेंट जब दिया जाएगा तो असाइनमेंट को उसको हैंड रिटन लिखना रहेगा. उसको प्रॉपरली स्कैन करके जो साइट आपको मिलेगी उस पे अपलोड करना रहेगा. सर कॉलेज वाले ने बोला था कि 6 सब्जेक्ट का बुक मिलेगा हम लोग. आपको बुक 6 मिलेगा बट वो कंबाइंड होगा. जैसे आपके मेजर है ना, 3 मेजर सब्जेक्ट है, वो तीनों की एक बुक होगी. फिर जो आपके टोटल 11 सब्जेक्ट्स है ना, तो उसमें जो एक बुक होगी उसमें दो तीन करके ऐसे सब्जेक्ट होंगे. जो सेम डोमेन से है उसके बुक कंबाइन होंगे.
अभी आप लोगों को सर जैसे ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है कि क्या कैसे होगा। आपके जो भी सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी सब्जेक्ट्स हैं वो सब आपको अवेलेबल करवाया जाएगा एट द अर्लीस्ट। आप लोगों के ग्रुप में कुछ पीडीएफ शेयर हुए हैं टेलीग्राम ग्रुप में फॉर द रेफरेंस पर्पस, तो यू कैन जस्ट फॉलो दो स्टडी मटेरियल्स फॉर टाइम बीइंग। सर कॉलेज में जैसे इम्पोर्टेंस देते हैं एग्जाम के पहले, वैसे इधर भी दिए जाएंगे? नहीं, यहाँ पे इंपॉर्टेंस नहीं दिए जाएंगे। सर असाइनमेंट भी बना के देना पड़ेगा? यस, विदाउट असाइनमेंट सबमिशन हाउ यू कैन क्लियर योर एग्जाम्स? सर जो भी असाइनमेंट प्रोजेक्ट जो भी रहेगा वो टेलीग्राम के ग्रुप पे आ जाएगा, राइट? यस, मैंने बोला है जो भी ऑफिशियल कम्युनिकेशन होगा वो टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू ही होगा। नो, यू कैन नॉट हैव प्रीवियस ईयर का बुक बिकॉज यू आर अंडर एनईपी, दैट इज न्यू एजुकेशन पॉलिसी, एवरीथिंग इज न्यू एंड योर बैच इज फर्स्ट बैच अंडर एनईपी। ओके ओके सर सो जो 30 मार्क्स के पेपर, नहीं 30 मार्क्स दिया के पेपर होते जाएगा। हैं ना सर मेरा एक क्वेश्चन है। सर, यस मेरा एक डाउट है सर, 30 मार्क्स के जो पेपर है वो एक दिन में 2 होंगे ना? यस, वो एक दिन में दो होंगे, एक होंगे। आप लोगों को एग्जाम का भी कोई टेंशन नहीं लेना है। मतलब सर मेरा जैन मेरा सी का अटेम्प्ट है तो दिसंबर में रहेगा, तो टाइम लगेगा ना? मोस्टली यूनिवर्सिटी ट्राइज इसलिए की पूछ रहा किसी था। भी नेशनल लेवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के साथ में डेट्स क्लैश नहीं होते हैं, हाँ सर लेकिन जो टाइम लगता है ना पढ़ने के लिए। तो वो तो तो करना जय पड़ेगा मतलब आपको अगर इफ यू आर हाँ मतलब परसुइंग वो बीकॉम के पैरेलल एग्जाम, थिंग। सर बीकॉम के एग्जाम एक हफ्ते में खत्म हो जाएंगे ना मिनिमम? ये टाइम टेबल आने के बाद पता चलेगा। ओके सर। सर जो कॉलेज में इम्पोर्टेंस मिलेंगी वो अगर हम लोग रीड करें तो अच्छा रहेगा ना सर? No, you have to follow the syllabus only because college से कहाँ you are into distance education mode, so every college is following different patterns, so college के importance यहाँ पे काम नहीं करेंगे। ओके सर, थैंक यू। वेलकम। नेक्स्ट मेरा एनीबडी इज, क्वेश्चन था, बोलिए। प्रीवियस ईयर का बुक मतलब उसका लिया था मैंने तो पहचान वाले का, तो वो कुछ काम नहीं करेगा? इफ एनईपी में है तो काम करेगा, इफ नॉन एनईपी बुक है तो काम नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि चलेगा आप सर। लोग एनईपी के अंडर हो, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। हेलो जो आपने इम्पोर्टेंस ओके भेजे सो हैं पीडीएफ जो भेजा है आपने उसमें से हाँ, ही आएगा ना एग्जाम में? आप लोगों को सिलेबस फॉलो करना है। योर एग्जाम इज बेस्ड ऑन द गिवन सिलेबस। ये जो सिलेबस दिख रहा है ना आपको, दिस इज योर एंटायर आईएमपी और एनीथिंग यू कैन से, नथिंग विल बी आस्क्ड आउट ऑफ टॉपिक, so everything will be from ये this जितने भी topic only। पीडीएफ आए हैं यही यस यस पढ़ने का यस, है ना सर? वही जो वही आप पढ़ना है, रेफरेंस मटेरियल के लिए वही यूज करना है आपको। सर हम आइडिया कैसे लगाएंगे कि किस टाइप का क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में? आपको एग्जाम के पहले पेपर पैटर्न बता दिया जाएगा। सर एनईपी 2020 बुक्स है ना अवेलेबल अभी? तो आप लोगों को कुछ मेजर की बुक्स ना टेलीग्राम में चेक करोगे ना तो आपको पीडीएफ शेयर किया गया है, कुछ स्टडी मटेरियल ऑलरेडी शेयर किए गए हैं, तो आप लोग वो फॉलो कर सकते हो, गो थ्रू कर सकते हो। बाकी सब्जेक्ट के जैसे जैसे अपडेट होते जाएंगे वो आपको ग्रुप में शेयर होगा। थैंक यू सर। इम्पोर्टेंट सर हम लोग को मैथ्स नहीं होगा क्या? हेलो सर, हम लोग को मैथ्स नहीं होगा क्या? फॉर अ टाइम हेलो बिंग नो। सर मैथ्स का तो बुक भी नहीं प्रोवाइड होगा, तो मैथ्स का प्रैक्टिस कैसे करेंगे हम? As of now, maths is not there, but if maths is included, you will get to know through the official Telegram channel. Okay, so सर स्टैटिस्टिक्स है? sorry, स्टैटिस्टिक्स सर बुक सब्जेक्ट कभी लेने आना है कॉलेज में? बुक्स अभी फाइनल प्रिंटिंग बाकी है, आपको इसके लिए सॉफ्ट कॉपी शेयर किया गया है। जब फाइनल प्रिंटिंग हो जाएगा ना तो आप वेबसाइट चेक करोगे तो वेबसाइट पे आपको नोटिस दिख जाएगा। वंस यू गेट द नोटिस देन यू कैन कम टू द यूनिवर्सिटी टू कलेक्ट योर बुक्स। सर सॉफ्ट कॉपी में अकाउंट एंड फाइनेंस का ही बुक आया है बस, एक ही सर आया मेरा है। एक सर क्वेश्चन था। अकाउंट्स के लिए एनापेरे की बुक चलेगी क्या? If syllabus is same then that's okay। ओके, थैंक सर यू। जो
सर I वो think मेल I का think सीडी I होता है think टेलीग्राम पे everybody नहीं is आएगा। getting confused. I have given you 10 minutes to ask questions related to the topics I have covered, but you are asking so many questions. I have only one answer. You have to wait, or you have to check your official Telegram group for all of these queries answers. सर ऑफलाइन बैच की होती है Sorry. सर? Yes. कुछ नहीं सर। Okay. So thank you so much, class. I am winding up this class. Will Sir, meet one last you question. in the next lecture. Bolo, Akash. Hello. Yes. Sir, whatever you are teaching basically, तो ये MCQs होंगे or it would be like question and answer based of exam? Internal will be mostly in MCQ base, and external will be a brief type of question. And every subject has Okay. different paper pattern, so you will get to know about the paper pattern before the exam. जो एक तो lectures होंगे उसमें आपको paper pattern discuss कर दिया पेपर जाएगा। So पैटर्न whatever, आएगा ना सर टेलीग्राम पे? Yes, paper pattern आएगा। so whatever lectures are being conducted right now, Yes. so we can refer to those lectures before the exams, like for Yeah, studying right. materials. Definitely. You can refer to these lectures and you can have the reference books. If you see the syllabus now, there are reference materials are mentioned. So you can follow those books as well. Okay, sir. Thank you very much. Okay. Thank you so much, class. I am just winding up the lecture. Thank you so much.